Hello students, welcome to my channel. Today we are going to do perimeter and area for class 5. So what is the perimeter? The distance around a plane figure is called its perimeter. मतलब कि ये जो बाउंड्री है ये ही perimeter है. इसका जो भी हम लोग निकालेंगे लेंथ वो ही perimeter है सिंपल लैंग्वेज में. सो रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. नाउ वी विल डू एक्सरसाइज 17A, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. हियर लेंथ इज गिवन, ब्रेथ इज गिवन. हियर लेंथ इज गिवन एंड ब्रेथ इज गिवन. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. Perimeter of rectangle formula is 2 into length plus breadth. Simply we will put measurement of length here and breadth here. Okay. Now we will add 10 plus 6. We will get 16 meter. Now multiply 2 into 16. We will get 32 meter. So this is your answer. Now next sum. It is given 15.8 centimeter. 6 whole 1 by half centimeter, 5 whole 3 by 4 centimeter. Now perimeter of rectangle 2 into length plus breadth. We'll put length here, breadth here. Now this is mixed fraction. We will change it into improper fraction. So how will we change? 6 to the 12, 12 plus 1 13, 13 by 2. 5 4s are 20, 20 plus 3 23 by 4, like this. Now denominator 2 and 4 are denominator, so we'll take the LCM here. 4 will come. So in detail see here, 13 by 2, 23 by 4 it is given here. We'll take the LCM, so it is 4. Now 4 divide 2. सिंपल भाषा में नीचे वाला से डिवाइड करोगे, ऊपर वाला से इंटू करोगे. तो 4 यहाँ पर डिवाइड 2 इंटू 13. नाउ 4 डिवाइड 4 इंटू 23. डिवाइड करने पर आएगा 2. इससे इसको डिवाइड करेंगे 2 इंटू 13. फिर इससे 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1 इंटू 23 बाई 4. 2 इंटू 13 इक्वल टू 26. 1 इंटू 23 इक्वल टू 23 बाई 4. बाई 4 लिखना है. 26 प्लस 23 क्या आएगा? 49 बाई 4. इस तरह से आएगा. याद. नाउ 49 बाई 4 आ गया. अभी ये 2 इंटू करना है. विल मल्टीप्लाई दिस. नाउ 2 1s are 2, 2 2s are 4. बचा क्या? 49 by 2. एंड दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. फिर इसको वी विल चेंज इनटू मिक्स फ्रैक्शन लाइक दिस. विल डिवाइड 2, 2 2s are 4, 2 2s are 4. नाउ 9 उतारा, 2 4s are 8, 9 में 8 गया 1. देन ये जो 24 है, जो आंसर है वो इधर लिखते हैं एंड द रिमाइंडर विल गो हियर एंड दिस 2 here. तो इन दिस वे ये मिक्स फ्रैक्शन में चेंज हो गया. 24 होल 1 by 2 सेंटीमीटर. नाउ सी नंबर 15.8 सेंटीमीटर, 8.6 सेंटीमीटर. बोथ आर इन सेंटीमीटर. दिस इज इन डेसिमल. सो सिंपल विल पुट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. लेंथ में उसका मेजरमेंट बैठाएंगे, ब्रेथ में उसका मेजरमेंट बैठाएंगे. देन वी विल ऐड बोथ. ऐड देखो कैसे करना है. 15 डेसिमल 8, 8 डेसिमल 6. डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा. इसको ऐड करेंगे. वी विल गेट 24 डेसिमल 4. नाउ 2 को से मल्टीप्लाई करेंगे. विल गेट 48.8 सेंटीमीटर. सो दिस इज योर आंसर. Now see D number. It is 1 meter, 20 centimeter, 60 centimeter. Okay. So
perimeter of rectangle is given 2 into length plus breadth. Now in length we will put length, breadth में उसका measurement बैठाएंगे. Then 1 meter 20 centimeter. Here it is 120 centimeter. We will convert it into centimeter because we want same units. Centimeter here and here also centimeter. So how will we convert it? See here. One meter into 100 equal to 100 centimeter. Then we will add 20. This 20. So we'll get 120 centimeter. In this way we'll get this. Now 120 plus 60 equal to 180 centimeter. Now we'll multiply 2 into 180, we'll get 360 centimeter. Again we can convert it into 3 meter 60 centimeter. See how will we convert it? Divide by 100. 100 divide करेंगे, then we'll get 300 and 60 remainder. It is 3 meter and it is 60 centimeter. Because 1 meter equal to 100 centimeter होता है. That you have learnt in class 4 also. Now E number. Perimeter of rectangle 2 into length plus breadth. Same बैठाना है formula. Question is 12.5 meter, 5.5 centimeter. Now see here, it is in meter and it is in centimeter. Both measurements are not same. So 12.5 meter, 12.5 meter plus 5.5 centimeter. We will convert this meter into centimeter. So 12.5 meter into 100. Because 1 meter equal to 100 centimeter, so we'll multiply this with 100. तो हम लोग को मिलेगा 12500. We'll multiply 5 के आगे, क्योंकि 1 के आगे डेसिमल है, हम लोग भी 1 के आगे डेसिमल लगा देंगे. तो मिलेगा क्या, बचेगा क्या, 1250 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर. अभी इन दोनों को ऐड करना है. We'll add this. See. So we will add this. So 1250 ऐड करेंगे 5.5 से, तो we'll get 5, 5, 5, 2, 1. So here it is given 1255 decimal 5 centimeter. Now we have to multiply this with 2. 2 से multiply करेंगे तो we'll get this. See here, 2 5s are 10, 2 5s are 10, then 1 carry, then 5, 2 1 2. So 2511 centimeter. Now we'll convert it into meter centimeter by dividing this with 100. So when we divide it by 100 like this, 100 2s are 200, then 51 is left, then 1 नीचे उतारा, then 200 5s are 500, फिर 11 बचा. Now 25 is quotient, this is meter, 25 meter, and the remainder is 11 centimeter. Okay, so 25 meter 11 centimeter answer. Now F number. 2 meter 12 centimeter 30 meter. We have to now again perimeter of rectangle 2 into length plus breadth. Length is 2 meter 12 centimeter, breadth is 30 meter. Now we'll convert both in centimeter. So see here, 2 meter into 100 equals to 200 centimeter plus 12, we will get 212 centimeter. Now 30 meter, if we multiply with 100 as 1 meter equal to 100 centimeter. Now we'll multiply it, we'll get 3000 centimeter. Now we will add both, we'll get 3212 centimeter. Now we'll multiply this, we'll get 64
6424 centimeter. See here, multiply. Now we'll convert this into meter centimeter like this. 106 are 600, then 42 remainder, 4 will come. Now 100 4s are 400, 24 will be remainder. So answer will be 64 meter 24 centimeter. Answer. Now see G number. 23.3 centimeter, 7 centimeter breadth. So length is 23.3 centimeter plus breadth is 7 centimeter. Now we'll add both. सेंटीमीटर है यहाँ पर, तो दोनों यूनिट्स सेम ही है, कुछ कैलकुलेशन का ज़रूरत नहीं है, ओनली ऐड करने से हो जाएगा. तो वी विल ऐड दिस 23.3, 7.0, we'll put 0 here. So 3, now 10, now 3, 30.3 will come. Now 2 into 30.3 will get 60.6, 60.6 centimeter. So this is our answer. Now H number. Length is 5 meter 20 centimeter, breadth is 42 centimeter. Perimeter of rectangle we know now. Now we know that perimeter of rectangle is 2 into length plus breadth. Now we'll put length here, breadth here. Now we'll add both. First we have to change it into centimeter, as it is also in centimeter. So see, 5 into 100 equal to 500 centimeter plus 20 will get 520 centimeter plus 42. Now we'll add both. We will get 562 centimeter. 2 into 562 will get 1124 centimeter. Now we have to change it again like this. 100 ones are 100, 12 remainder, 4 नीचे आया, then 100 ones are 100, 24 remainder. So 11 meter 24 centimeter. So this is your answer.